Good morning, students of class 10. Today I will be taking a biology class and we'll start our biology also. Last week, as I mentioned, I could not take the biology class because of your result preparation. So we are going to now today continue with biology. We were looking at asexual reproduction, or more specifically, we are looking at asexual reproduction in plants. Today we are going to look at the topic of vegetative propagation present in plants. You must have seen that in most plants, प्लांट के केस में क्या होता है कि अगर आप एक ब्रांच को काट के कहीं दूसरे जगह पे लगा देते हो तो वहां से भी कुछ कुछ प्लांट बढ़ जाते हैं. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. व्हेन अ प्लांट कैन ग्रो from a non-sexual part of a plant, then it is called vegetative propagation. When a new plant can rise from a non-reproductive part of a plant, then it is called vegetative reproduction. Okay? कि जब कोई प्लांट का नॉन रिप्रोडक्टिव कोई एरिया से नया प्लांट बनता है उसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वी हैव सीन दिस इन मेनी केसेस, राइट? लाइक गार्डनर्स यूज दिस टेक्निक when they cut down a branch of a rose and put it in other place, from their new rose plants can. Like in case of dahlia also, the flower called dahlia, that if you take out a branch and places it in another place, a new plant can grow from it. So this is what is vegetative propagation. But vegetative propagation doesn't only happen from the branches. It can happen from different parts of the plant body. Only it has to be a non-reproductive structure. So what are the reproductive structures of the plant? Obviously it is the flower. So any part other than the flower or fruit which produces a new plant is the mode of vegetative reproduction. You can see that some plants extend their roots below the soil and from that root new plants come out. This is mostly in case runners like grass. जो ग्रास हम लोग देखते हैं उसमें ये होता है. उसमें क्या होता है कि नीचे से, जमीन के नीचे से उसका जो जड़ है वो आगे बढ़ता जाता है और वहां से हर जड़ से, हर रूट से अलग अलग प्लांट, अलग अलग ग्रास आ जाता है. दिस इज अ मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. Similar to that we have certain plants from which द ब्रांचेस, जो उसका ब्रांच होता है, ब्रांच का किसी पार्ट से एक रूट निकल आता है, फिर धीरे धीरे वो ब्रांच मेन ट्री से अलग हो जाता है और वो अपना एक प्लांट हो जाता है. वी कैन सी इन द केस ऑफ सर्टेन वेजिटेबल्स लाइक स्वीट पोटैटो, राइट, वेयर the root can produce separate plants also. Some cases these roots store up food for the future plant. ये इस रूट में अलग से फूड स्टोर हो जाता है फ्यूचर प्लांट के लिए. तब इसको हम लोग कहते हैं ट्यूबर. लाइक इन नॉर्मल पोटैटो ऑल्सो. नॉर्मल पोटैटो इज ऑल्सो अ modified stem. From the stem, if you look at a normal potato, you will see small outgrowths come out, right? कि उसमें से छोटा छोटा outgrowth आता है. Those outgrowths are called tubers. Those tubers can in turn give rise to new plant. अगर आपके घर में एक आलू है तो उस आलू को थोड़ा सा कोई गीला जगह में कुछ दिन रख दीजिएगा. देखिएगा कि आलू के अंदर जो छोटे छोटे होल्स रहते हैं या छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जिसको कहा जाता है आई ऑफ पोटैटो. इन नॉर्मल इंग्लिश इट इज कॉल्ड आई ऑफ पोटैटो. फ्रॉम दैट न्यू प्लांट्स विल कम आउट. एक दो करके लीव्स आना शुरू कर देते हैं आलू के. सो पोटैटो इज अनदर एग्जाम्पल वेयर वेजिटेटिव propagation happens. Another very interesting case of vegetative propagation happens in the case of the plant Bryophylla.
Bryophyllum, the leaf can give rise to new plants. कि अगर एक पत्ता उसका कहीं पे गिर जाता है तो उस पत्ते से नया प्लांट ग्रो कर सकता है. द लीफ हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स. सो दिस मोड ऑफ propagating one's generation by organs or by parts of the body which are not directly responsible for reproduction is the mean of vegetative reproduction. तो ऐसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. इस सेक्शन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा. ओके, एंड टुमारो वी विल कम बैक विथ अनदर सेक्शन, विथ अनदर पार्ट, and after that we'll go into sexual.